तो भाई लोग हम लोग ना लाइव आ गए हैं और ओबीएस पे चले जाता हूँ पहले डायरेक्ट। खैर एक बार लिख के बता दीजिएगा आप लोग आ रही ना। मैं एकदम सो के उठा हूँ मैं हाल फिलहाल। और आवाज़ एक बार आ रही कि नहीं आ रही। देखो विजन एस और विजन जो अपना एस एक्स टी जो सॉरी अपना विजन टी और एस एक्स टी है वो तो आ गए हैं आपके। और आवाज़ थोड़ी गूंज रही है ना, आप लोगों को भी आ रही गूंजती हुई आवाज़? चलो जो भी एक बार कमेंट लिख दो फटाफट 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 से। और हाँ, मैं कह रहा था कि आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है कि नहीं ये बताना अभी एक बार, है ना। इसको एक बार रिमूव करते हैं, ये स्क्रीन कैप्चर दिखानी क्यों है ना। चलो एक बार फुल स्क्रीन आ जाता हूँ मैं यहाँ से और कमेंट वगैरह बताना आप लोग ऑडियो सही आ रही है वीडियो सही आ रही है तो। और फेक अरे भाई अभी तो आई भी नहीं गाड़ी, अभी से कैसे फेक बोल रहे हो तुम। गाड़ी आने तो दो पहले उसके बाद। भाई देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज ना ऐसा भी हो सकता है कि वापस बोल इको आ रही है यार, इसका इको का क्या सोल्यूशन हो ओपीएस में। मैं देखता हूँ आपके आप इन्हें डाउट वाउट लिखते रहो अपने। इसको एक बार देखना पड़ेगा यार क्या है ऑडियो कैप्चर में डाउन मिक्सिंग। अभी बताना ये हटाया कुछ मैंने डाउन मिक्सिंग, अभी बताना भी सही है यार। बहुत दिनों बाद ओपीएस चला रहा हूँ ना इसलिए हो रहा है। भाई आज ही बुलेरो शो होगी क्या यार? देखो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आज बुलेरो शो होगी नहीं। आपको पहले दो चीज़ में दिखाता हूँ कि एक तो इनका विजन, तीन दिखाता हूँ बल्कि तीन नई गाड़ियाँ आई हैं इनकी। साथ साथ में बात करते रहते हैं हम लोग, है ना। एक बार चले जाते हैं, आपको एक वो दिखाने पहले विजन, अपना विजन जो अभी इन लोगों ने एक्स दिखाया है वो मेरे को सबसे बढ़िया लगा कि विजन जो एक्स आया है ना इनका वो कुछ चीज़ है। खैर ये देखो भी। और अभी आपको सामने दिखाऊंगा विजन एक्स जो है। बहुत सारी गाड़ियाँ इनके यहाँ चार हैं बेसिकली। जो एस वाला विजन है ना वो थोड़ा समझ के है, क्योंकि एक्स में ही मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा कि जो अपनी आ रहा है। अब यार बुलेरो का बताओ भाई, मेरे को जब आएगी सामने से बता दूंगा यार बुलेरो का बताओ। तुम कह रहे हो बुलेरो का ही बताओ, भाई बुलेरो आए तो बताऊँ मैं सामने, ऐसे कह रहे हो। कमाल है यार। एडवोकेट भाई कह रहे हैं बुलेरो आज रिवील होगी, नहीं तो दिल भाई मेरा भी बहुत दिल दुखेगा। इतने दिन से मैं भी यही वेट कर रहा था बुलेरो का, और मैं भी बस यही वेट कर रहा हूँ कि आ जाए। खैर हाँ, मैं आपसे कह रहा था ना कि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो एक बार। और हाँ भाई, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। और एक मिनट मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था। ओके यहाँ से ब्राउज, एक दो चीज़ दिखानी है मेरे को आपको। एक तो विजन, एक सेकेंड भाई बस, एक बार आप अपने डाउट्स लिखते रहो है ना, फिर वो अपने मैं क्लियर करते रहूँगा आपके डाउट्स। मुझे बस 2 मिनट लग रहे हैं थोड़ा सा सेटअप करने में, तब तक के लिए आप कोऑपरेट करते रहो मेरे साथ। अपना था और ये था अपना स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन। हाँ तो ये देखो ये चीज़ दिखा रहा था मैं आप लोगों को एक बार। ये देखो ये मैं बता रहा था आप लोगों को, दिस इज द विजन अपना जो नया एक्स विजन आया है ना। ये देखो आप लोग एक बार, ये विजन एक्स है और इसके अंदर ये अगर आप गौर कर रहे होगे तो ये वाला जो फ्रंट में आपको दिख रहा है ये लोगो महिंद्रा यूजुअली यूज़ करती है सिर्फ और सिर्फ अपनी जो मतलब आइस गाड़ियां हैं, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन वाली जो गाड़ी हैं उन लोगों के लिए ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इतने ही नहीं, इसके और लुक्स दिखा दूंगा आप लोगों को यहाँ से। ये देखो ये कितनी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है भाई।
सच में मज़ा आ गया। हालांकि ना एक अब की बार ये लोग टीज़ एक और चीज़ कर रहे हैं कि सिर्फ हम एक में सेटल क्यों हों, मतलब ओनली वाई विजन सिर्फ हम लोग ईवी में क्यों जाए जब हम पेट्रोल में भी जा सकते हैं, हम डीजल में भी जा सकते हैं, वाई नॉट बोथ। तो हाइब्रिड तो 100% आ रही है। अगेन फ्लश डोर हैंडल्स जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इसमें। और इसी के साथ साथ जो है आप लोगों को एक और दिखा दूँ मैं, ये देखो, ये चेकआउट कर सकते हो भाई, गजब है, मतलब सही सा लग रहा है देखने में, ये है काफ़ी ज़्यादा। और क्या कह रहे हैं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ चेक करो ना ये क्या हो गया, आवाज़ में इको बहुत ज़्यादा आ रही है, प्लीज़ अपनी आवाज़ सही करें। याद करता हूँ रुको, वॉइस तो नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, आ तो रही है यार आवाज़ भाई। ये इको का मैं कुछ करता हूँ यार, एक सेकंड रुक जाओ बस, इको का मैं देखता हूँ 2 मिनट में। सबको आ रही होगी यार, ऐसा मत करो, ठीक है। एनीवेज, हाँ ये था अपना विजन एक्स। अब वही मेरे भाई लोग बोल रहे हैं, कमेंट तो देख ले। ये लो, एक सेकंड। हाँ, तो भाई इको वाली चीज़ ऐसी है कि पता नहीं किस वजह से हो रहा है, मैंने बहुत देख लिया, वो समझ से नहीं आ रही और उसमें टाइम लग जाएगा फिर, और 13-14 मिनट में तो इवेंट ही आ रहा है। हाँ, मैं आप लोगों से बता रहा था ये चीज़ कि विजन एक्स जो आया है अपना, और वो पक्का जो है हाइब्रिड में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उसमें लोगो उस तरीके का यूज़ करा गया वो जो अपना यूजुअली ईवी और वैसे होता है, ठीक है। कमेंट आया है, बुलेरो का क्या अपडेट है, ये वाली वीडियो एक्स कॉपी लग रही है BX6 की। भाई लो वापस दिखाता हूँ आपको एक बार, नॉट, वापस इसको ऊपर लाना पड़ेगा एक बार, स्क्रीन एक बार, ये कॉपी नहीं है। हाँ, ये देखो फिर से आपको दिखाऊं, दिस इज नॉट कॉपी, ये ना थोड़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट है इस बारे में। जरा यहाँ से लो, आपको लगेगी कि ये BE6 की कॉपी है, बट द थिंग इज कि इसमें ना अगर आप रियर में देखोगे या पीछे की तरफ देखोगे, और हाँ भाई पता है महिंद्रा रिवील्ड कार्स, मुझे पता है। तो ये ना छोटी बनाई है मेरे हिसाब से, दिस इज मोस्टली कि जो जितने लोग, मतलब अब वो BE6 जो है आपकी आराम से 18-19 लाख के आसपास जाती थी, तो जितने लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, शायद उन लोगों के लिए ये वाला छोटा एक जो वर्जन है इस गाड़ी का निकाल के लेके आ रही है कंपनी, है ना, ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके विजन एस और अपने SX, ये भी तो 4 विजन जो है होंगे। अब भाई क्या पूछ रहे हैं, भाई नई बोलेरो सच में लॉन्च होगी आज? भाई देखो वेट तो हम पूरा ही कर रहे हैं, इन लोगों के कुछ जो अपने वो हैं, क्या बोलते हैं, कुछ इन लोगों ने दिखा दिए हैं और कुछ जो हैं ये लोग दिखाने वाले हैं, तो बस उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ मैं, और जैसे ही इवेंट स्टार्ट हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग भी फटाफट से जो है आप लोगों को लाइव दिखा देंगे। फ्रॉन्क सिग्मा विद हाइब्रिड आ सकती है क्या? हाँ जी आमिर भाई, फ्रॉन्क सिग्मा विद हाइब्रिड के पूरे चांसेस हैं आने के, बट अभी आज तो मैं बोलेरो का वेट कर रहा हूँ। और कल पावर ड्रिफ्ट ने भी एक वीडियो डाली थी बोलेरो फेसलिफ्ट 2025 की, अगर आपने नहीं देखी होगी तो बताओ, मैं दिखाता हूँ। उसमें जो गाड़ी है और भी बेहतरीन दिख रही थी। देखो है तो वो बोलेरो ही, और लॉन्च भी बहुत जल्द है, बट आज चूंकि महिंद्रा कह रही थी कि हम विजन एस को दिखाएंगे, और आपको पता होगा विदेशी मार्केट में जो विजन एस यानी कि थार स्पोर्ट्स नाम से आ रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। नाम ले लो वीडियो में, आयुष पांडे भाई, हाय। सेरा का क्या स्टेटस? सेरा अभी लॉन्च नहीं हो रही भाई, सेरा को टाटा लॉन्च करेगी जितना मुझे लगता है अक्टूबर के आसपास, जितना मेरे को लग रहा है सितंबर अक्टूबर फेस्टिव सीजन के आसपास आपकी टाटा सेरा आ जाएगी, एंड आप लोगों को जो है अपनी टाटा पंच भी समवेयर अराउंड उसी टाइम को देखने को मिलने वाली है ना। तो वो चीज़ है थोड़ी सी। और भाई कमेंट पढ़ लेते हैं साथ साथ, मेरे भाई बहुत सारे गुस्सा भी हो सकते हैं इस चीज़ से। हाँ भाई कमेंट में पूछो आप अपने डाउट्स जो भी हैं, सिर्फ 10-1 मिनट में तो जो अपना इवेंट है वही स्टार्ट होने वाला है, फिर जो है हम लोग आप लोगों को और भी लाइव कब होगा, अरे आयुष का नाम ले लो भाई, ले लिया भाई आयुष का नाम, लाइव कब होगा, लाइव कब होगा महिंद्रा का शो? बस नेक्स्ट आप लगा लो 10 मिनट में लाइव हो रहा है अपना महिंद्रा का जो शो है, तब तक आप लोग मेरे से बात कर सकते हो, और मेरे को कुछ अगर और दिख रहा है तो मैं वो भी शेयर करता हूँ आपके साथ। बाकी मैंने वो छोड़ ही रखा है विजन एक्स, बहुत बेहतरीन। अच्छा विजन एक्स की एक वीडियो दिखाऊँ आप लोगों को, चलो ये लो भाई।
लाइव है भाई, ठीक है। सुन रहे हो? भाई इस ओबीएस ने आज जान खा ली मेरी। जितने भी लोग हैं, बुलेरो कितने बजे होगी भाई? डीलर्स आर डिनाइड अबाउट बुलेरो फेसलिफ्ट वर्जन। मुझे न्यू कार लेनी है भाई, बुलेरो आएगी क्या? भाई भाई रश्लिन का लेटेस्ट शॉट देखो, वो बुलेरो का कंसेप्ट लग रहा है। हाँ यार, है ही सारी गाड़ियाँ कंसेप्ट, और ये तो पता ही है मेरे को, वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि भाई आप लोग जस्ट वेट कर लो थोड़ी देर, अभी आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा क्या है कैसा नहीं, है ना। तो थोड़ा सा वेट करना रहेगा बस इस चीज़ का। बाकी आप लोग जो है E27 में आएगा क्या? E27 में क्या आएगा भाई? यार पूरा डाउट लिखा करो अपना। बुलेरो कितने बजे आएगी? बुलेरो कितने बजे आएगी? भाई मैं भी बुलेरो का ही वेट कर रहा हूँ मेरे भाई, बुलेरो का ही वेट कर रहे हैं हम सारे, आप भी कर रहे हो कि मैं भी कर रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा और वेट कर लो, 10 मिनट में तो अगले इवेंट स्टार्ट ही हो रहा है अपना। एक सेकेंड रुक जाओ बस आप लोग। अब भाई लॉन्च कब होगी? रिलायबिलिटी इश्यूज कब होगी लॉन्च? कार्स भाई अगले हो रही है, 6 मिनट में लॉन्च हो रही है। बस अगले 6 मिनट में लॉन्च हो रही है मेरे भाई आप लोगों के लिए। मुझे पता है आप लोगों को मेरी स्क्रीन रील नहीं दिख रही, वो मैं जान कर ही कर रहा हूँ। अब सेट कर रहे हैं ना सारा का सारा आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही ना भाई। ये लीजिए अब आपका थोड़ा सा डिले ना हो इसलिए मैं एर्टिगा का अपडेट भाई, थार भी लॉन्च होगी क्या? थार भी आ रही है 2027 के आसपास मेरे भाई। 2027 से पहले आपकी थार नहीं आएगी, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए, समझ रहे हो? एर्टिगा का अपडेट दीजिए भाई। हाँ एक भाई ने कहा था कि एर्टिगा का अपडेट बोल के चला गया और कोई अपडेट वगैरह नहीं दिया। भाई देखो बात ऐसी है कि वापस मैं कह रहा हूँ कि मेरे हाथ में नहीं होती गाड़ियाँ लॉन्च करनी कोई भी। मेरे को ऐसा तो है नहीं कि भाई वो लोग मेरे को पास में बिठा के गाड़ियाँ लॉन्च करवा रहे हैं या कुछ करवा रहे हैं, समझ रहे हो ना आप वो चीज़। तो वही है बस, और अपडेट वगैरह आएंगे तो मैं दे दूंगा। बाकी हाँ, एर्टिगा भी आप लोगों को 100% जो है उसमें देखने को मिलेगी नए अपने उनके साथ नए टेल लाइट्स आ रही है उसमें कनेक्टेड, और आप लोगों को उसमें थार 3 डोर नहीं आ रही अभी। बुलेरो कब आ रही है? आज ही वेट कर रहे हैं भाई। विजन एक्स कब आएगी? विजन एक्स तो अभी आ जाएगी, विजन एस का वेट करो मेन अगर कर रहे हो तो। विजन एक्स वगैरह छोड़ो, विजन एस का वेट करो। काइलेक में कौन सा फ्यूल डलवाते हो भाई? मैं XP95 डलवाता हूँ काइलेक में। बुलेरो कब आ रही है भाई? आज ही आ रही है बुलेरो, जितना मुझे लग रहा है। बुलेरो कब आ रही है भाई? आज ही आ रही है बुलेरो, मुझे जितना लग रहा है भाई। मैं तो वेट कर ही रहा हूँ, आप लोग भी वेट कर ही रहोगे शायद से बुलेरो का, है ना। काइलेक में कौन सा भाई तब? हाँ तो आप बस इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, तो उसमें आपकी क्या गलती? हाँ सही बात है नीरज भाई, वो ये नहीं समझते यार, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई झूठा है तू, ये सारी चीज़ें। खैर जो भी है, देखो मैंने एर्टिगा की आप लोगों को हेडलाइट दिखा दी थी, उसमें प्योर आपको ऑडी इंस्पायर्ड हेडलाइट्स मिलने वाली हैं एर्टिगा में। फिर उसके अंदर जो है आप लोगों को नई टेल लाइट्स मिलने वाली हैं। एर्टिगा ना बहुत साल से अपडेट नहीं करा गया है प्रोडक्ट, तो बहुत वेरी ऑब्वियस है कि वो प्रोडक्ट जो है अब आप लोगों को
बहुत चेंजेस के साथ मिलने वाला है, और एक्सेल 6 को भी बदलेंगे। XP100 डाल सकते हैं क्या? भाई देखो, XP100 डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप 160 रुपये का फ्यूल डलवाओगे, डजंट मेक एनी सेंस। 160 रुपये में आप क्या ही बचा लोगे? अगर आप मान लो 2 साल तक भी उस फ्यूल को यूज़ कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी उतनी कॉस्ट दे चुके होगी, जिसमें आप लोगों के जो कंपोनेंट्स अगर आप सिंपल पेट्रोल डलवाते हो उससे खराब होते हैं। 60 रुपये महंगा है वो, और सिंपल वाले पेट्रोल से तो न जाने कितने रुपये महंगा है। तो देयर इज नो पॉइंट कि आप 160 रुपये महंगा फ्यूल जो मतलब 160 रुपये लीटर फ्यूल डलवा रहे हो। हाँ, स्पोर्ट्स कार है तो बात अलग है, बाकी नॉर्मल गाड़ियों के लिए आई डोंट रिकमेंड। XP95 पे मत जाओ। तो XP95 में कितना होता है भाई? देखो, अकॉर्डिंग टू RTI 20% एथेनॉल है, और 95 में जो 95 होता है वो होता है विजन टी इलेक्ट्रिक है क्या? विजन टी, हाँ ये इलेक्ट्रिक है। विजन टी, विजन S60 सारे इलेक्ट्रिक है। हाँ, मैं कह रहा था वही जो आपका XP95 में और इनमें फ़र्क क्या रहता है, जो आपकी 95 है ना, वो 95 रिसर्च ऑक्टेन नंबर है। दैट्स रिसर्च ऑक्टेन नंबर, कि आपकी गाड़ी नॉकिंग ना करे और ये सारी ना करे। और 90 जो होता है अपना 91, XP91 सिंपल पेट्रोल होता है, उसका रिसर्च ऑक्टेन नंबर हुआ है। तो उसका रेटिंग से कुछ लेना देना नहीं है, इथेनॉल से कुछ लेना देना नहीं है, उसका जो है वो यही है। बोलेरो अपना रगड़ लुक रखेगी क्या? हाँ, बोलेरो में तो रगड़ लुक रहेगा ही मेरे भाई एकदम। और अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और भी शेयर कर देता हूँ मैं साथ के साथ। 2 मिनट दे दो बस, अब लाइव अपना होने वाला है, और विजन S के लिए वेट करेंगे हम सारे, क्योंकि इतने दिन से जो टीज हो रही थी विजन S, उसी के ऊपर सारा का सारा हम लोगों का बोले तो बोलबाला टाइप सा था, या सब लोग वही वेट कर रहे थे, है ना। खैर, अब विजन S के लिए वेट करा जा रहा है, आप लोग भी शायद उसी के लिए वेट कर रहे होगे। हर्ष ब्लॉग साइट का डीजल आनी चाहिए। डीजल तो ये अभी नहीं आएगी, जितना मुझे लगता है डीजल नहीं आने वाली है। एटलीस्ट मारुति तो डीजल में हाथ पैर नहीं रखेगी अपने, जितने मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बट ऑब्वियस मारुति नहीं चाहेगी कि इतनी महंगी उनकी गाड़ियाँ आए। समझ रहे हो आप लोग ये? चलो, अब 2-1 मिनट में अपना होने वाला है। महिंद्रा ने भी कल बम फोड़ दिया अपना इलेक्ट्रिक वर्जन ला के। हाँ, आप देख रहे हो, आप लोग, मैं बताता हूँ। भाई XUV700 फेसलिफ्ट भी आज का ही एक्सपेक्टेशन था। क्या क्लासिक बोलेरो बंद होगी? नहीं होगी भाई, क्लासिक बोलेरो कभी बंद नहीं हो सकती। विजन X डीजल होगी क्या? हम महिंद्रा में तो भाई, आप डीजल के लिए ये रख लो कि महिंद्रा डीजल छोड़ने वाली नहीं है, उनका तो भाई USP है वो, है ना। काइले कैसी है भाई? बढ़िया गाड़ी है काइले, 20 लाख के अंदर अच्छी कार। मैं मेरे पर्सपेक्टिव से देखो तो मैं जाऊंगा भाई, अगर आपको माइलेज चाहिए तो क्रेटा की तरफ जाओ डीजल। चलिए गाइस, बस अब लाइव होने वाला है स्टार्ट, एंड अब हम लोग भी शांत हो जाएंगे। चलिए आ जाइए। All right. A very good morning to all of you. Thank you so much for joining us here on this August 15th, and a very, very happy Independence Day to all of you. This is not only a marquee event for our country, but also, as you are all aware, a marquee event for Mahindra, the much awaited August 15th. And we always do something spectacular and exciting on this day, as you are all aware. And we cannot wait to reveal what we have got for all of you today. Just before we start the proceedings, I request all of you to please keep your mobile phones on silent, and if possible upside down so the light doesn't interfere. That would be really, really appreciated. And now I would like to invite Dr. Anisha on stage to start the proceedings. Good morning. There are a few days in history when one can truly say that we are witnessing the cusp of change. And today is one such day. What you're about to see today is the first step towards two distinct paradigm changes. One is a paradigm shift in design, and the second is a paradigm shift in technology. It's a day of excitement, a day of anticipation. As we stand here today on India's 79th Independence Day, it is a great matter of pride for all of us. Just 5 years ago,
we embarked on a journey with bold ambitions. Our ambition was to lead, not to follow. To disrupt, not be disrupted. Disrupt, not be disrupted. To take Indian ingenuity and resilience to the rest of the world, and to lead not just in India, but across the world. From the rugged Thar to the sophisticated XUV 700, to the legacy of the Scorpio and our electrifying BEVs, we have set the auto stage on fire, and we have a lot more to do, much further to go. We have taken great strides in international markets as well, but there again, we're only scratching the surface right now. Today we are honored to unveil a bold new vision for 2027 that will become the backbone of a next generation of world-beating SUVs, engineered right here in India for the world. There was a time, not too long ago, when global automakers dominated our roads and aspirations. Today the tide has turned. Indian companies like Mahindra are at the forefront of technology, scale, and ambition. While we have been exemplifying this across many of our group companies, a special mention to our auto team, and in particular the Chakan plant that is scaling up for global demands as we look to continue our path of leadership in technology and overall in the automobile space. For this, we will continue to innovate relentlessly, solve for unmet customer needs, using both the engineering prowess that we have and the research center that we have in Chennai that is a key contributor to our success. I'd like to take the opportunity to thank all of you who are present here, to thank our suppliers, our channel partners and media partners, and of course our auto team for really leading the way and showing what India can do. Because the most important paradigm shift is that India will now lead the world. We've set the stage for that, we have shown successes, and we're taking that further. So as we celebrate another year of freedom, we at Mahindra renew our unwavering commitment to rise, to advance India's aspirations and create world-beating vehicles. Thank you. Good morning, all of you. Welcome and happy Independence Day. It is a moment of freedom, a moment we cherish, and it's a pleasure to be with all of you again today on this holiday of which is the 15th of August. So I just want to start with something you've seen before, and this is what we call our brand purpose statement. And this is very important. This is a statement we crafted in 2020. And that was the beginning of what has been a strong success story. There are some very critical words that you see on this chart, and the first one is life is an adventure. And we really believe we are here to leverage the adventure mindset in people, and for those who want to live it boldly. We've also spoken about the kind of people we have in our team, agile, bold and collaborative, but what they're going to do and bring to customers. And that is authentic SUVs. You see on the bottom a definition of what is an authentic SUV. Adventure capable and
which tell our story of origin. That means creating brands which are true to our origin, true to our DNA, but in a very sophisticated, upgraded, tech-ready, sustainable way. So this is really, the reason I'm flashing this back is what you're going to see today is an extension of a purpose statement we made for ourselves 5 years back. And we want to be true to this in everything that we do. We have disrupted to become the number one. What you see on the chart back here, with each of the launches over the last 5 years, how our SUV revenue market share has moved up. So what you see in Q1 F21, which was really the year 2020, that was the year we launched the 3-door Thar. At that point of time, our SUV revenue market share was 13.4%. And you can see how that has moved up with each launch over the last 5 years to the last quarter, which is building in the effect of our born electric SUVs, taking us up to 27.3 revenue market share. This is now a revenue market share of a very large chunk of the market. It is the SUV market, and now we'll talk a little bit more around that, is 65% of the total vehicle market. So a substantial chunk in which we have a revenue market share of now over 27%. What got us here? And in a way, I'm going to connect this back to the brand purpose statement that you just saw. We believe one of the most important things that got us here was insight. Going back to the first line, life is an adventure. We really believe and have understood from customers that customers are looking for a getaway. Life is very burdensome by itself. And really people are wanting exploration as a part of their life. They have a desire to get away, and vehicles of a certain kind are the best enablers to that. Fundamentally, we build our business on this insight, which is about making choices and which is the next key parameter of what our building block is, which is focus. So if we have caught on to an insight, then we've got to make sure that everything that we do is delivering on that insight. And that's what focus is. So which means we often get a question, will you play in cars or will you play in category A or B or C? And the answer is no. We're not going to deviate from what we believe our brand stands for and the core DNA of our brand. And you'll hear more about what that is today as we talk about our vision going forward. Design has been a very critical part of our success. Our products connect with customers emotionally. We've designed products which are very sophisticated and technology-led, but at the same time making them very accessible to customers. And then the last element is the brand and the go-to-market strategy. So I think we've got this element of the chain, which is insights, focus, design, products, and brand go-to-market, as all coming together, delivering on a wholesome, holistic brand purpose. I'm going to talk about 5 pillars. Again, these were defined by us at the same time that we defined the brand purpose statement 5 years back. These are the 5 pillars which drive our product strategy. Can you go back? Sorry. So the 5 pillars that drive our brand strategy are turn on design, which is really about creating products with an unmissable presence. The second, and these are words straight out of our document made 5 years back, not designed for today. It's not a slide we've created for today. Our products must deliver spirited performance, and we call that power on tap or on tap power. Safety, you've seen we've been continuously delivering the highest safety scores. And then we'd used a term 5 years back called Sky-Fi today.
What that means is what you may imagine as technology, which can't come to you in the near future, is what we've got to bring today. So it has to be sci-fi today, not sci-fi in the future. And the last is, of course, the brand is about tough, but we need the edginess and the sophistication and the refinement which customers look for. So that's really is, in short, the story of our brand purpose, what we did to get there, and some of the key tenets on which our strategy has been built. The reason I'm recapping this is you're going to see this as we go forward, and you will connect some of what we've spoken about earlier to what you're going to see later as we go into our vision of 2027. Now, we get asked one question a lot in media meets, in analyst meets, and really what is that most asked question? Are there more white spaces? So really, okay, you've done something, you've got these 4-5 products, is that the end of the story? Or is there more such space for growth? And is there enough headroom for us to grow? And that really is the answer to the question. The answer to that question is, that's what our Global Vision 2027 is about. It will help all of you understand that we still have a lot of headroom for growth, and Nal will now come on to walk you through how the market dynamic looks and where the white spaces are. So over to you, Nal. Thank you. Good morning. So can you guys hear me? Yeah. Our journey to the Vision 2027 is built out of our commitment to building authentic, true blue SUVs. And within Mahindra, we have come to call that segment core SUVs, and you'll hear that a lot when we talk to you guys. So I'm going to spend a couple of minutes talking about what we mean by core SUVs and why we believe that's the right bet, which we took 5 years ago, and that why it continues to be the right bet for us. So it's a little bit of a busy slide. Let me spend a couple of minutes on this. So core SUVs for us, you take the entire universe of all the UVs. We take out MPVs out of it. Industry calls that UVs. For us, we take it out. And any kind of hatchback-derived crossovers, we take it out. That to us is core SUVs as we look at it. And you step back and look at 2022, core SUVs used to be less than 20% of the market. But the interesting thing was the customer preferences were changing. There was an increasing choice made to go for core SUVs. And that drove the market. In fact, if you see the overall growth of the passenger vehicle market, almost all of it was driven by the core SUV market. The market itself grew by 2x of what regular PV growth is. So if you look at core SUVs as a market, it was growing twice as fast as PV overall. And within that, thanks to the launches that Rajesh talked about, we've actually grown 3x. Our core SUVs have outpaced the market 3 times. And in some ways, that tailwind gives us the confidence to double down that bet and say that we are going to continue to focus on core SUVs. The question is, are there more white spaces? With growth which is 3x as much as PV, does it still leave some room? The interesting thing is, even after the last 3 years of growth, if you look at it, core SUVs is still just about 30% of the entire PV industry. So to us, the white space is the rest of the 70%. It doesn't mean that I'm going to go into that 70% of the market and start to produce micro SUVs
sedans, hatchbacks. We're going to stay true to our core SUV DNA, the 5 pillars Rajesh talked about, and go after the market. So if you look at it, 30%, I can grow 2x from here, and we still have room to grow from where we are. So that gives us the ability to do that. Now, you'll remember, when we say core SUVs, it's not just about commanding height, ground clearance. We actually disrupted the market when we came in a few years ago and said that we are going to bring you next-in-class features. We're going to get ADAS, for example, when 700 came. What used to be enjoyed by the top 5% of the market, and start to truly democratize it and bring it to the rest of the market. And that gives us the confidence that we can go do the same thing in the rest of the 70% of the market in India. But with the products that we're going to be putting out, we believe we can start to now go global and compete in the rest of the market. So how does this look in the global markets? I'm looking at the entire universe of mainstream SUVs globally. The premium SUVs, which we used to call next in class in India, and the features they used to have, that's just about 5% of the market. The rest 95% of the market is waiting to be disrupted, to be given next in class features in mainstream SUVs. So the playbook we have taken in India and what we have done over the last 4 years is the same playbook we're going to start to play out in the rest of the world. And guess what? That addressable market outside India is twice as big as what is there in India as well. So it's a huge opportunity, and with the platform we're putting out, our aspirations are truly global at this point in time. So what we're going to be unveiling today is the next drop shipment of SUVs. And we're going to be doing that by pushing the boundaries of what's possible. We're going to be doing that by, as always, exploring the new impossible. And Velu will come in a little bit and talk a little bit about what do we mean by that? What do we mean by pushing the envelope on what's possible? And for us to be able to do that, we're looking at putting together a brand new platform, built to totally new standards in terms of performance, built on innovation which is born out of our design centers in UK and Mumbai, and crafted and brought to life in MRV, and infused with intelligence, which will showcase each and every product coming out of this platform. I'll just cue for the platform logo here. So I'll get off to the side. So the platform which is going to underpin our next set of products is new IQ, pushing against a totally new set of standards and infused with the IQ which has not been seen in next generation of cars as well. So to talk a little bit about new IQ and what we are doing there, I want to invite Velu on stage. Velu. So the new IQ platform directly takes on the global C2 segment. I just want to give some clues about the global competition. You can pick it up, you are very smart guys. The information is not yet out in X platform, so there is one clue. And the information is evolving. There is another clue. These two platforms are international platforms, selling quite well, luxury platforms. That's what I'm going to compare in the tables that are to come. This platform is designed in MRV to take care of multiple requirements. And I'm going to say this with Arjuna's bird's eye, and as Durnacharyas, you write the judgment.
With this platform, we are going to build multiple products. And Brother Guru is going to show you those multiple products. And the thunder is yet to come. It's the foundation that I'm building for you, for the C segment guys. Anish said these are world-beating products. The automotive world is in the cusp of change. And Rajesh left with very interesting two messages. The insight, the focus, the if it is done, then what? Nal said white spaces, we look for the bird's eye like Arjuna's. Now I'm going to look for the bird's eye like Arjuna's. The most important thing in my childhood that I learned is when I'm sitting on the shoulders of my grandfather, I used to tell my grandfather there is a bullock cart coming and go to the side. And that got imprinted into my head. And then said, in the compact segment, compared to any international cars, SUVs, we have to give the seating, commanding seating position for the A. And what is the right dimension? So how did we arrive at 1563? It's very simple. If you have the 5 feet and 5 inch average Indian, the A height is roughly about 1540 millimeters. So we added another 23 millimeter and said 1563 is the number. That gives me the feeling of standing on my shoulders of my grandfather and gives me the confidence to tell him what he has to do. Isn't it? That's why we don't compare with the benchmark. As you see, we are far away from that. So that's the Astra number 1. Of course, you get the ground clearance. Inside, you have to relax. You have to recline and you have to arrive. Compact segment is not an economy seat. It's a business class. And I was looking at Nal and Rajesh, and they are 6 feet. And if I don't give them the relaxing leg room, you know what happens to me. So what we sit, always the compromise happens in the second row. If I had to fully, like the business class, stretch my leg, if we're 6 feet tall, 3 feet you have to give that space as a leg room. The 937 second row is little bit better than the 3 feet that you see. In a compact, no other car gives that dimension 937 if you are closer to 4 meters. So our car is about 4.3. The next one, SUV 1 is 4.4 and the SUV 2 is 4.5. You can refer it. In 4.3, can you give this legs room? I told to Nal and Rajesh and they said, okay, well done job. So that's the Astra that we are bringing, the bird's eye focus. So therefore, we have to increase the wheelbase to 2665. It's one of the best wheelbases that we have in this segment, which means the cabin and the luggage space we give. So we have to take care of the frontal crash and the frontal occupation. I will come there next. So when you give this and when you give the spacious cabin, always Tronacharyas, you will ask me, how are you handling the ride and the handling part of it? Always the compact segment guys look for cost saving and they say we will put a twist beam. And person like Hormas comes and says, the twist beam, it's an age-old technology and why are you putting it? And then it's not it is not to be considered as a competition suspension system. I asked him once 2 years ago what he thinks should be in the compact segment. He said, can you put the 5-link? I said, no. The international cars have 3-link, the one that you saw it there, the first benchmark. The second benchmark has only 4 links. I said, if you are at the cusp of transformation of our automotive technology, then you should bring 5 links. I didn't understand what the meaning of 5-link, but I know now. The red controls. When you take a turn, it controls the stability.
The green and blue gives you the right camper, and the yellow gives the tow for you. It is completely de-linked, and you can tune the way you want, then you can give the space to it. That's a filing suspension. First time in the world we bring it to compact segment. And then we thought about it for the Mumbai roads or the Pune roads or Chennai roads. You need the best damping to this. Over 3 years, we have been working with the supplier and then said, if I have certain CG, I need to have the best control of this body. Nowhere in the world this technology is available, and we said we will develop it, and though we coded it Da Vinci. First time we will introduce this Da Vinci. As you see, to control the body, at point 2, you need certain force. And naturally, the force is increasing and the ride becomes bad. We said you cannot increase, you can make it horizontal. That's the technology we introduced it. With 5-link and Da Vinci shock absorber, it sets new standards. It's a suspension disbelief. That's what we call it internally. The commercial aeroplanes, their approach angle is 15 degrees. Beyond that, they fall. Okay, what about fighter jets? They are 25 degrees. We wanted the aerodynamics engineers to learn from our engineers, and we said we make it 28 degrees. Don't worry about any speed breakers. Anywhere in the mall, just go over. Your front bumper will not hit. Its approach angle is 28 degrees. And so is the ramp over angle. That's 28 degrees. It's nowhere closer to it's far away from the SUV1 and the SUV2. Do you still consider and continue to rate me like Dronacharya, or you have already green ticked? This is the best, I like it. In the roads of the Indian cities, you need to turn this in a very, very low turning circle diameter. And like we brought the filing suspension and the Da Vinci damper, we wanted to bring the variable pitch. What does it do? Simply, the benchmark 1 has 10.9 circle diameter, turning circle. The benchmark 2 has 11.6. And though I have 2,665 wheelbase, I turn it in 10.5. It sets the new benchmark. Therefore, we call it as turning heads and corners. Better than the rest. Isn't it? This is so beautiful. Riti gave me the rank, I've fallen off from the chair. How can you define better than this, the luggage space so beautifully? Thank you, Riti. This time, we want to put to rest any discussions on the luggage space. And we said this is 15% better than any competition. Again, this is global competition. I'm not comparing the Indian competition here. With all of this, you may be thinking, what is the weight of this car? And will it have the agility that Nal spoke about and Rajesh spoke about, the spirited performance? We have designed it, the MRV engineers designed it in a way, for the mass to volume, we have the lowest, the 26.5. The way to remember 26.5 is, the moon takes 27.5 days to go around the earth. And we said you need to be 1 day lower than that, that is 26.5. That's a ratio. It's a nature's gift that we took it and put it. And you see the rest of the benchmarks where they are. I'm not taking the highest volume of my product and therefore getting the advantages. When I reveal it later, you will see the BIW weight is the lowest. That gives the highest agility and spirited performance. We talked about the front compartment that's responsible for powertrain packaging and safety, the occupant's compartment and the luggage compartment. I'm sure absolutely you are convinced the occupant's compartment and the luggage compartments, we are way ahead of the compact, but in the crash we have to look
into the Mahabharata and come up with some astras. These astras are not earned easily, but these astras are hard-earned. Have a close look at it. In the middle of the floor, you typically don't have the strength, and we have asymmetrically placed ribs to strengthen it. Therefore, we got 101 patents so far for the engineering work that we have done. It meets the global GNCAP. It designed for GNCAP 5-star, not only GNCAP, the ENCAP 5-star and the ANCAP 5 stars. So it meets every safety standards that's available in the world. That's how it comes. That's on the safety side of it. We wanted to get this spacious vehicle to have the best structural integrity of the BAW, and we invented a concept called Uni-Ring. This Uni-Ring gives the highest stiffness to the side of the vehicle that drives like a jet, and that's the most important thing for the side crash for us. You all know the Inglo platform with all its reliability done, durability done in the EV. That battery pack straight away comes to this car. I'm not traveling into this. A strong bonds of the bottom floor and the side wall survive every test. So do we. It's most interesting, is it? Rajesh came and told, we were telling Rajesh we have a gangway. No, you have a flat form, not the plot form. And we said, with the 2665, this is the best gift that you can give it to your compact segment customers. Even the 4.5 meter long car has only this 162, and it's without tunnel. And we said with the tires, we don't accept the tunnels anymore. And therefore we rise the standards, not with the tunnels, but with the flat. Still there are people in the world who believe the earth is flat. But you really believe it when you get into this vehicle. 229 is an auspicious number. All that we said, now would you like to see the platform in the digital views? AV, please. Arjuna had multiple astras, and very powerful one he got it from Shiva, but he didn't use in the war. But he used the one astra to win the war, that is Anjalika. And this is the one that is connecting the brains, the heart, and the soul. Before you see from Pratap Guru the full-flown form of this brain, heart, and soul, Vinay came and said, he will put the coding into it to create it, and that's we are bringing the hardware structure differently, architecture, software architecture differently, and functional architecture. Then we connect to cloud, we call it as an SDV, and from here onwards, from web onwards, we bring in this technology to our cars, and so we continue to do that one. It's intuitive, it's intelligent, and so let us look at this Hachamai video. The best man that I know who can put all this brain, heart, and soul, I call it always Pratap Guru. Pratap Guru, can you come up, please? Thank you.
morning, good morning, good morning. You know, India dreamed of freedom 79 years ago and achieved it, and all of us are here today. We as the global Mahindra design team dream of a platform like this that really lets us express design in its purest form. All of you know we have 5 brands, and today we'll show you products across 3 of them, or in that direction. But at the start of any project, we ask ourselves a few fundamental questions. And the questions that are hardest to answer actually get the most creativity out of us. They push us, and they push us to find something new. When we set out to define our vision for the products that would come on New IQ, we kept our hardcore philosophy in the front and center of everything we did. As you know, hardcore is about falling in love. It's about designing hardcore SUVs straight from the heart. And in that theme, we found that opposites attract was going to be central to every product that we would design on this New IQ architecture. It was going to be the flavor of our solutions, and they also framed our questions. So we said, when opposites attract, sparks really fly. The first question we asked was, can new be iconic? For something to become iconic, it takes time. It has to live in the world. It has to live amongst people. It has to be loved and appreciated. So we said, can something be born iconic? Let me take you through a little bit of the design process for 2 Vision products, or 2 Vision SUVs, one called the Vision T and one called the Vision SXT. As you know, we start all our projects with proportion. This is what we discuss and work closely with our colleagues at MRV. Proportion is at the heart of every product we design. How do you get authentic SUVs, both visually and functionally? Something that has the ability of Veluguru's team. How do we express that in design? So that's what we start. Surfaces comes next. Really sculpted, really strong shoulders, strong wheel arches to give you that sense of ability. And finally, the details. God lies in the details, said Mies van der Rohe, the architect. And we truly believe that the details should be part of the whole. Next, we come to the interiors. Interiors are also about proportion. How do they make people feel? What is the width of the cabin? What is the sense of space beyond the measurements that we are given? How do you feel that roominess? What do the colors do? What do the materials do? What role does it play in building an authentic brand? So these are the ways we sort of work through proportion, surface, details, and interiors. And of course, the design team globally, both in the UK and here in Mumbai, work to that minute level in everything we do. So let me show you a little clip on what the Vision T and the Vision SXT are meant to do.
excitement coming up. Please, I request you to please get back to your seats. Thank you. I think we can go up and have a little chat. So, Velu sir, I think the unmissable presence was quite clear to see. So should we now go? No, No? I did tell you the best man on the earth to put the brain, heart and soul. I saw the souls of you reflecting back, right? Can you give a clap to, put your hands together and give a clap to Pradap Guru. Thank you, Pradap. We don't leave you here, you know. You made it 4.3. But what happens to the customers who are just below 4? That's true. That's true, Velu Guru. I don't know what the answer is. No, but you and your team came up with such an incredible one, right? So Pradap Guru came up with certain ideas, and then we said, we are not going to disturb the platform, and we are going to design the sub 4 meter with the same 2665, which means the sub 4 meter car gets exactly the same, the leg room, the command seating, all the stuffs, it gets it. So we wanted to take this platform and bring it to the products just below the 4 meter. So it gives the versatility, economy of scale in a single box that will blow the minds of the people to out of the box. So it covers from sub 4 meter to 4.3 meter, and you see the silhouettes of those. The shoulders, the strength, the muscle. So we asked ourselves a question that can something sculptural be moving? And for that we set off on the Vision X design process. It's the same thing. It's always about proportion. Wheels at the corners, a wide planted stance, athletic shoulders, beautiful definition all around the car. Of course, the class-leading ground clearance, the biggest wheels in the segment. That really makes this a powerful visual entity in terms of proportion. Then we move to the surfaces. When I said sculpture, this is where two surfaces come together and leave a mark. That's the design language of the Vision X. They don't just blend into each other. They live on their own, but when they come together beautifully. And you can see that in the design sketches that our designers make. Surfaces also talk about how light moves around the car, and that's what it is about, movement. And finally, we come to the gorgeous details. We spend as much time, if not more, on the details than anything else on the car, because that's what you touch, feel, see, come close to. And last but not the least, it's our interior design and materials. This has got, again, a cockpit-like or a fighter plane-like cockpit, but nice expansive space. The instrument panel gives you that sense of space that we talk about, but everything is wrapped quite tight around you, and everything flows beautifully from one to the other. And that is, in short, the Vision X. Now let me show you what the Vision X would look like on the streets. Can we have the AV, please?
equipment was the Vision X. I hope you love that. Now at Mahindra, we don't, we don't do things small, we'll go large. So as you know, there's one more product we would like to show you on the same new IQ architecture. Can we move to that slide? The Vision S, please. So the question we asked here when we were designing the Vision S is, can solid still be sporty? That's that contradiction, the juxtaposition of two opposites. Opposites attract. Can solid be sporty? I'll take you through the process, and like you know, we make hundreds of sketches across the design studios. Again, starts with proportion. We are blessed with great proportion on this architecture. It almost makes the life of the design team easy. I don't want to use that term very liberally. My team will kill me. But I think when you've got solid proportions like this, designing a phenomenal SUV on top of that comes much, much easier. So you can see, even while it's tall, it's still wide. It's still planted on its wheels, on its arches, with that ground clearance that's going to be class leading. So how do you create the interior for a car like this? It's the same thing. Sense of space, all the controls where you need them. And many of you have asked me this question: is HMI going to go completely digital, or are we going to bring back some buttons? And as you can see here, it'll be a great combination of digital and physical, and it runs the new UX that you saw in Velusan's presentation. Now, how do we see the Vision S? Let's see the clip.
Request everyone to please settle down. Right? Request everyone to please settle down. Request everyone to please settle down. Guys, relax, relax. Request all of you to please settle down while all the four cars come down. We'll have a leadership photo up and then you can get on stage with the photo shoot. Please bear with us for 2 minutes. Guys, 2 minutes. Request all of you. Just give us a minute. Everybody please look in the center. तो भाई आप में से बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे कि भाई ये जो है कौन सी थी अपनी मतलब महिंद्रा बोलेरो थी। एक मिनट वो बंद कर दूं पीछे से अपना ग्लोबल जो भी है हमें नहीं चलाना। अब हाँ आज बात कर रहा था, मैं कह रहा था आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई ये महिंद्रा बोलेरो नहीं है। भाई देखो मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाना चाहता हूँ। दिस इज द महिंद्रा बोलेरो का विजन एस एंड सबसे पहले भाई सब्सक्राइब कर दो। इवेंट में रात को 8 बजे आराम से वीडियो डालेंगे, अभी सबकी वीडियो आएगी होगी, आपको जो देखना चाहिए देखिए। मैं खैर मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ दिस इज द महिंद्रा बोलेरो का विजन एस एंड विजन एस जो है वो आपने बाहर थार स्पोर्ट्स देखी होगी। देखो आपने ना इस महिंद्रा के इवेंट में एक चीज बहुत गौर करी होगी अच्छे से एंड दैट इज कि महिंद्रा ने अपने दोनों लोगो जो हैं वो साथ में दिखाए हैं। मतलब कि जो उनका ईवी वाला लोगो होता है वो भी साथ में दिखाया है एंड उनका जो अपना आइस वाला लोगो है वो भी साथ में दिखाया था। तो दिस मेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये जो गाड़ी है ये आप लोगों की मतलब ईवी भी है और आइस भी है। खैर मैं एक बार कमेंट सेक्शन खोल लेता हूँ अपने, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अब शायद से देख रहे होंगे। तो हाँ ब्रोंको की कॉपी मार ली भाई। देखो हाँ ब्रोंको की कॉपी है। अब सबके भाई फेक न्यूज़ क्यों स्प्रेड करते हो आर्यन
भाई तुम बता दो फेक न्यूज़ क्या है, फेक न्यूज़ क्या नहीं है। बस वहाँ पे छोटे से फ़ोन से कमेंट करने से फेक न्यूज़ क्यों स्प्रेड करते हो? मैं इतने दिन से सेम चीज़ बता रहा था, विजन एस वही आने वाली है और वही आई है। और जाके तुमने अगर स्पाई शॉट्स कभी देखे भी हों तो स्पाई शॉट्स में थोड़ा सा ध्यान दे लेना ये चीज़ का कि स्पाई शॉट से डिट्टो मिलती जुलती है गाड़ी। और आइस में भी आएगी, ईवी में भी आएगी, हाइब्रिड भी हो सकता है। इसमें फेक न्यूज़ वाली कोई बात ही नहीं। बाकी अगर आपको फेक न्यूज़ लगती है तो आप कभी भी इस चैनल को छोड़ सकते हो, ठीक है। मैंने हमेशा से सच न्यूज़ बताई है, सारी वही है। तुम्हें लग रही है तो तुम चैनल छोड़ दो, कोई वो वाली बात नहीं है। ठाकुर राजेंद्र सिंह भाई कहते हैं कट गया। भाई कटा नहीं है, थोड़े पॉजिटिव रहो, कटा नहीं है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आने वाला है। एंड मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि टाटा सेरा जिस दिन लॉन्च हो गई उस दिन आप लोग समझ लीजिए कि ये महिंद्रा बोलेरो भी आ जाएगी। याद होगा कि जब टाटा हैरियर की ईवी आई थी तो टाटा हैरियर की ईवी आने के बाद ही महिंद्रा ने अपने बोलेरो के टीजर्स या फिर हम बोले लीक्स लाने स्टार्ट कर दिए थे। तो महिंद्रा इज वेरी कॉन्फिडेंट इस चीज में, या फिर वो लोग जो हैं किसी ना किसी तरीके से अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको दबाना चाहते हैं। दिस इज ठीक है, तो कटा नहीं है, खत्म, टाटा बाय बाय। अरे शाम को 8 बजे वेट करो, पूरी डिटेल वीडियो आएगी। बोलेरो, हाँ जी, विजन एस इज ओनली बोलेरो। जो आपने देखा विजन एस वो बोलेरो ही था। हाँ, यहाँ पे एक आधी चीज ऐसी है कि हमें लगा था XU700 फेसलिफ्ट आ जाएगी एंड फिर जो है अपनी महिंद्रा थार आ सकती है। तो यहाँ पे महिंद्रा की एक चीज मुझे गलत लगी थोड़ी सी कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करा उन लोगों ने, बस विजन दिखाए, तो वो थोड़ा सा गलत लगा। बट फिर भी विजन में आप लोगों ने विजन एस देख लिया और एस पे आप लोग समझिएगा भाई बोलेरो है, मुझे ट्रस्ट कर लो, विजन एस इज ओनली बोलेरो। अब एस क्यों लगाया उन लोगों ने वो नहीं पता, बट विजन एस जो है आप लोगों ने, या फिर चलिए अब हम एक और तरीके से बात करते हैं। कोड नेम जो अपना हमारा ये था कि इतने दिन से हम लोग एक गाड़ी देख रहे थे जो हैवीली कैमोफ्लॉज में थी, ठीक है, वो कैमोफ्लॉज वाली गाड़ी जो है वो विजन एस थी, हम लोगों ने देख ली। अब ये छोटी गाड़ी है, ये सब 4 कॉम्पैक्ट में आने वाली है, 4 मीटर से छोटी गाड़ी है, समझ रहे हो इस चीज को। प्राइसिंग इसकी कम होगी क्योंकि इंडिया में जो अपने 4 मीटर से नीचे वाली गाड़ियां होती हैं उनको कम टैक्सेस देने पड़ते हैं, ठीक है, समझो इस चीज को। अब चूंकि कम टैक्सेस देने पड़ते हैं तो प्राइस भी कम होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो अपनी ब्रेजा हो गई, हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी गाड़ियां हैं सारी की सारी 4 मीटर से छोटी होती हैं। तो 4 मीटर से छोटी गाड़ियां इसलिए सस्ती होती है क्योंकि इंडिया में टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। अब यहाँ पे इसमें अगर इन लोगों ने पेट्रोल का इंजन भी दे दिया सेम 3XO वाला तो भी इसका प्राइस कम रहेगा, और डीजल भी इन लोगों ने 1.5 लीटर डीजल दे दिया, जो कि मेरे को लग रहा है 1.5 लीटर डीजल ही देंगे इसमें जो आप लोगों को अपनी थार में मिलता है। तो भी इसके प्राइसिंग ज्यादा नहीं जाने वाली क्योंकि 2.0 जो लीटर डीजल इंजन है उनसे ऊपर ही शायद से कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते हैं। तो प्राइसिंग 10 लाख के आसपास आप इसकी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी इतने निराश मत हो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, ठीक है। दूसरा भाई कहते हैं बोलेरो दिखा दी। भाई ये सारी कार्स कब लॉन्च होगी? देखो इसमें आपको बताता हूं, जो विजन एक्स है वो थोड़े मतलब 2026 मान लो, विजन SXT और विजन टी जो है वो 2027 से लोगे 2023 में होने वाली हैं। जब आपकी मतलब अगले साल वो उनका विजन क्लियर है। बट जो अपनी यहाँ पे अभी ये विजन एस आप लोगों ने देखी जो कि सबसे लास्ट गाड़ी थी वो बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगी क्योंकि वो कैमोफ्लॉज में हम लोगों ने देख लिए ना। हमने थार इलेक्ट्रिक देखी अभी कैमोफ्लॉज में, ना हमने विजन एक्स देखा कैमोफ्लॉज में, ना हमने विजन टी देखा, हमने सिर्फ विजन एस को देखा है कैमोफ्लॉज में। तो वो गाड़ी अभी बहुत जल्द लॉन्च हो सकती है, मैं आपको यही समझा रहा हूं। देखो ऐसा होता है कि हमारे पे न्यूज रहती है बट हम ना आपको खुले में नहीं बता सकते, सोर्सेज नहीं बता सकते कि भाई ये न्यूज कहां से आ रही है कहां से नहीं आ रही, समझ रहे हो आप इस चीज को। वो है हर्ष भाई दारू पी रखी है क्या? हाँ भाई दारू पी रखी है बहुत ज्यादा, ठीक है। अरुण चीना भाई दारू पी रखी है, आप ही तो साथ में बैठे थे, चले गए क्या आप? नहीं यार पैक बनाओ यार, कैसी बातें है यार। एनीवेज छोड़ो, वर यू नॉट इनवाइटेड? हिंकुप मुखो भाई नहीं, हम इनवाइटेड नहीं थे। अगर भारत में आप लोग ब्रांड्स के बारे में सच्चाई बताओगे या उनके बारे में आप कुछ भी गलत रील वील या कुछ भी छोटी सी भी गलत आपने उनके बारे में चीज डाल दी, नेगेटिव भी डाल दिया, तो दे वॉन्ट इनवाइट यू। ये यहाँ का बहुत सिंपल उसूल है, समझ रहे हो आप इस चीज को। तो अगर असली कंटेंट देखना है और तो आप किसी भी इवेंट में इन्वाइटेड नहीं होंगे, बात खत्म। तो वो ये महिंद्रा के बारे में आगे से बुराई नहीं करेंगे तो सही है। ब्रोंको कॉपी मार ली, हाँ जी, कुछ क्लियर नहीं हुआ यार। देखो अभी कंसेप्ट है पर बहुत फर्क आएगा। हाँ बहुत फर्क तो नहीं आएगा बट हाँ विजन एस जो है जो अपना वो ऑलरेडी हम लोगों ने कैमोफ्लॉज में देख लिया है, समझ रहे हो आप लोग।
विजन जो एस है हमने ऑलरेडी कैमोफ्लॉज में देख रखा है, उसमें कुछ चेंजेस ज्यादा नहीं होंगे, ऐसी ही दिखने वाली है। बस कंसेप्ट दिया है अनपढ़ो। हाँ मतलब हाँ यार, ये वीपी नाइट भाई, हाँ कंसेप्ट दिया है भाई, सही कह रहे हैं कि कंसेप्ट है और कंसेप्ट के भरोसे ही आप लोग समझिए। और मैं तो भाई बार बार कह रहा हूँ, बार बार आप सबको कह रहा हूँ कि विजन जो एस है, विजन एस है, वो अभी तक कैमोफ्लॉज में जो हम लोग बोलेरो फेसलिफ्ट नाम से देख रहे थे, अब आप उसे बोलेरो फेसलिफ्ट बुलाओ, आप किसी नाम से बुलाओ, वो हम लोग इतने दिन से देख रहे थे, वो ही विजन एस जो आज दिखाया है। बाकी देखो, आप लोगों के डाउट भी लेजिट है, वो मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करता रहूंगा। आप लोगों के डाउट्स बहुत ज्यादा लेजिट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोगों के डाउट्स गलत वगैरह हैं या जो भी हैं, लेजिट डाउट हैं, तो समझ में आता है कि आप लोगों को भी थोड़ी बहुत वो हो रही होगी, ठीक है। अब रुको यार, यहाँ पे आ जाते हैं ना हम लोग, एक सेकेंड, हाँ इधर से आ जाते हैं डायरेक्ट। वेन अपने यहाँ डाउट्स क्लियर कर लेता हूँ। जो मेरे भाई देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, टाटा को देखकर घाई घाई कंसेप्ट शो करने, घाई घाई, हाँ घाई घाई का मतलब होता है जल्दी जल्दी, तो अपने वीपी नाइट भाई बोल रहे हैं टाटा को देख के। देखो यार सही है, टाटा भी अपनी तरफ से बढ़िया ही कर रही है और ये भी ठीक कर रहे हैं। कंसेप्ट ही था तो ये बोलेरो क्यों बोल रहा था, कंसेप्ट और रियल में फर्क होता है। हरप्रीत भाई तुम्हें नहीं पता कंसेप्ट और रियल में क्या फर्क होता है, हमें भी नहीं पता शायद से, है ना, आप ही ज्ञानी हैं। खैर मैं बता देता हूँ, इतने दिन से जो मैं बोलेरो की वीडियो बना रहा था वो ही है विजन एस। बाकी जिसको मानना है मानो, मेरा तो मैं तो बताता ही रहूँ, मेरे बहुत सारे भाई हैं जो प्यार करते हैं और आगे भी उनके लिए वीडियो आती रहेगी। एक दो नेगेटिव्स कमेंट आते हैं। विजन एस कैमोफ्लॉज में नहीं था क्या बोल रहे हो भाई? विजन एस जो आज दिखाया है ये ही हम लोग इतने दिन से कैमोफ्लॉज में देख रहे थे। एक बार अपनी आंखें बंद करो बस, और जो विजन एस है, मतलब जो अपना ये आज विजन एस दिखाया है, इसको कैमोफ्लॉज कर दो पूरा, आप लोगों को वैसी ही गाड़ी दिखेगी। बस एक चीज का ध्यान रखना, विजन एस जो है ये कंसेप्ट है, ये सिर्फ एक गाड़ी बनाई गई है। मानिए ये गाड़ी है, ये विजन एस है, फाइनल प्रोडक्ट ऑलरेडी रोड पे टेस्ट हो रहा है। ये चीज मैं समझा रहा हूं, समझिए इस चीज को, ठीक है। एनीवेज, और क्या भाई बोलेरो के लिए रुकेगा? भाई बिल्कुल रुको, बिल्कुल रुको, मैं कह रहा हूं बोलेरो के लिए रुको ब्रो। E27 कब तक आएगा भाई? E27 आएगा एक मिनट भाई, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? पहले लिख के बता दो मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। यूट्यूब तो दिखा रहा है कि अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, तो एक बार बता दो मुझे कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। हेलो 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 गाइस, हेलो, आवाज आ रही है क्या? विजन एस भाई आवाज का बता दो मुझे तो श्योर ही नहीं है मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आवाज का ही श्योर नहीं है तो आ रही, चलो ठीक है, सॉर्टेड। अब डाउट क्लियर करता हूँ आप सभी मेरे भाइयों के। भाई कह रहे अपना आज कोई लॉन्च नहीं भाई, हुई है लॉन्च नहीं हुई, रिवील हुई है बेसिकली। भाई पैसे जोड़े बैठा था, सोचा था 16 अगस्त को जाकर न्यू बोलेरो न्यू बुक करा दूंगा, मेरा तो कट गया, बुरा लग रहा है। भाई देखो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, कि मैं कह रहा हूं पूरे संसार में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आज गाड़ी दिखाई है, मतलब मैं कह रहा हूं आज लॉन्च भी करती तो कल आप खरीद सकते हो। ये तो रिवील थे, सिर्फ लॉन्च भी होती है ना गाड़ियां, उसके भी कुछ दिनों बाद गाड़ियां परचेज कर सकते हो। तो ये थोड़ा जो भी है, एनीवेज, आप कैसे क्यों रुपए जोड़े बैठे थे और कितने रुपए जोड़े बैठे थे भाई? भाई सिरा कब लॉन्च होगी भाई? फेस्टिव सीजन में हो रही है भाई। थार 3 डोर कब आएगी? पेट्रोल में। थार 3 डोर पेट्रोल में, थार 3 डोर तो ऑलरेडी पेट्रोल में आती है भाई बोलेरो के लिए रुकेगा भाई? 100% रुको, मैं तो रुक ही रहा हूँ। आज कोई लॉन्च नहीं भाई, लॉन्च नहीं, आज रिवील हुआ है। बोलेरो अलग लेवल की, बिल्कुल। व्हेन दीस कार कम टू मार्केट, वापस बता रहा हूँ, विजन टी, विजन एस एक्सटी 2027 से 2023, विजन एस बड़ी जल्दी आ जाएगा, विजन एस उसके बाद। भाई 3 डोर थार कब आएगी? जो अपडेटेड फेसलिफ्ट है वो सितंबर में देखने मिल जाएगी, आई गेस 3 सितंबर के आसपास। भाई बोलेरो के लिए रुकेगा भाई, 100% रुको। स्कॉर्पियो पिकअप लॉन्च डेट, हाँ आयुष भाई तुमने बहुत अच्छा डाउट पूछा भाई, सब लोग स्कॉर्पियो का वेट कर रहे थे। देखो काइंड ऑफ महिंद्रा का जो इवेंट था ना, ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ आया क्या इवेंट था, कैसा इवेंट था, क्योंकि भाई इन लोगों ने ना ही स्कॉर्पियो दिखाई, ना ही इन लोगों ने आपकी महिंद्रा XUV 700 फेसलिफ्ट दिखाई जो इतने से टेस्ट हो रही थी। हाँ विजन एक्स को जरूर बोल सकता हूँ कि एक बोलेरो जो भी फेमिलियर हम लोग इतने रास्ते देख रहे थे वो मिल गई है। बोलेरो अलग थी बिल्कुल, इट इज 7 सीटर भाई, ये 5 सीटर रहेगी भाई। बोलेरो के लिए रुकेगा, रुक जाइए। ट्रू इंडिपेंडेंस फॉर अमेजिंग चॉइस, इंस्पायरिंग इंडियंस। हाँ अच्छी बात है, बढ़िया लगा, अगर अच्छा लगा। ऑन प्राइस पेमेंट कितना होगा? देखो मैं आपको बताता हूँ। हाँ प्राइस अपने ये जिसॉन गेमिंग भाई पूछ रहे हैं प्राइस, भाई मैं आपको बताता हूँ। इस गाड़ी का प्राइस जो होगा, महिंद्रा XUV 3XO और जो हमारी थार RWD है, ये हम लोग मतलब ये एक अलग है सेगमेंट। अगर आप यहाँ बोलोगे बोलेरो क्लासिक
या बोलेरो नियो, तो वो ना थोड़े से आ जाते हैं मोस्टली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूज़ करते हैं या फिर जो हमारे रूरल जगह पे यूज़ होते हैं। तो अर्बन में जो आएगा ये गाड़ी अर्बन है, विजन एस जो आपने देखी अर्बन है, नई वाली बोलेरो, मेरे हिसाब से नाम भी चेंज करते हैं, क्या पता। तो ये जो आपका बोलेरो, एक मिनट यार, एक चीज देखना है। हाँ, तो अर्बन में जो आपका आएगा ये कि सॉरी हाँ, प्राइस में बता रहा था, एक्चुअली 3XO और जो आपकी थार 3 डोर जो आती है RWD, उसके बीच का प्राइसिंग होगा समवेयर अराउंड 9 पॉइंट ब्रैकेट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसकी प्राइस, ठीक है। और अब पूछते हैं भाई यहाँ से, हो सकता है भाई बोलेरो की जगह थार स्पोर्ट्स के नाम से आए? हाँ बिल्कुल हो सकता है केशे अर्षा भाई, बिल्कुल हो सकता है कि थार स्पोर्ट्स नाम से आ जाए और लोग ले भी लेंगे। क्या विजन है 7 सीटर है या फिर न्यू बोलेरो? भाई ये 5 सीटर है, 7 सीटर नहीं है ब्रो। E27 कब तक आएगा? तो अभी पेट्रोल गाड़ी लेना चाहिए नहीं भाई। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मारुति सुजुकी ऑलरेडी E20 किट्स अपग्रेड दे रही है मात्र 4,000 रुपये में, आप लोग देख लीजिए जाके वो। तो अब सीन ऐसा है कि आप लोग चाहे E20 गाड़ी ले लो चाहे E10 गाड़ी ले लो, क्योंकि किट्स आने लगी रेट्रोफिट, तो आप लोग जाके जो है परचेज कर सकते हो गाड़ियां और बाद में आप उनमें किट भी लगवा सकते हो। तो आप लोग इस चीज से मत डरिए कि अब गाड़ियां ले या ना ले, क्योंकि सिंपल सी चीज समझ जाइए आप लोग कि आप लोग अगर आप गाड़ी ले भी रहे हो तो उसमें बाद में किट आप डलवा सकते हो, ठीक है भाई। XUV 700 फेसलिफ्ट कब आएगी? यार अब तो देखो मेरे को लग रहा है डिले ही करेंगे, क्योंकि अभी इन्हें कंसेप्ट दिखाए। हाँ ऐसा है, टाटा सेरा, जिस दिन टाटा वालों ने अपना टाटा सेरा का टीजर्स निकालने शुरू कर दिए उस दिन महिंद्रा पीछे पड़ जाएगी उनकी, ये वेट कर रहे हैं। एक चीज मैंने समझ ली है, बोलेरो CNG में आएगी कि नहीं? भाई कोई CNG में नहीं आने वाली। क्या विजन है 7 सीटर नहीं 5 सीटर है? व्हाट अबाउट महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट? नहीं आएगा, उसका भी कोई फेसलिफ्ट नहीं आने वाला। हाउस में से वेरिएंट गायब कर रहे हैं शायद से, जितना मैंने सुना है। क्या विजन है 7 सीटर है 5 सीटर है? XUV 700 फेसलिफ्ट का क्या सीन? सितंबर अक्टूबर तक डिलेड है भाई, इस ईयर लॉन्च होगी क्या? यार देखो विजन एस तो मुझे लगता है कि एंड तक ले आएंगे ये, बाकी अब आपको ना कल परसों से पता चलने लग जाएगा, क्योंकि इनने विजन एस ऑलरेडी शोकेस कर दिया है। तो वो गाड़ी जो है वो आपको रास्ते पे और मोर ऑफन देखने को मिलती रहेगी, तो दैट मेक्स लेजिट है कि हाँ आ सकती है। हो सकता है बोलेरो की जगह थार स्पोर्ट्स के नाम से, हाँ हो सकता है। क्या विजन है 7 सीटर? भाई बार बार क्यों सेम चीज पूछ रहे हैं मेरे से, नीचे के ही लेता हूँ। क्या बोलेरो EV भी आएगी कंसिडरिंग ये प्लेटफॉर्म सब सपोर्ट करता है? हाँ बिल्कुल भाई, बोलेरो EV आएगी और वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए जा सकती है। इंडियंस तो नहीं लेंगे बोलेरो EV एज मेरे को लगता है, मैं भी नहीं लूंगा तो आप लोग भी नहीं लूंगे। स्कॉर्पियो क्लासिक आनी चाहिए भाई, स्कॉर्पियो क्लासिक ऑलरेडी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो नहीं निकालेंगे उसमें कुछ। राम राम भाई, क्या विजन T 7 सीटर है? हाँ विजन T हो सकता है भाई। बोलेरो नियो ले लें या वेट करें? भाई वेट करो पंकज भाई, अभी क्यों जा रहे हो नियो की तरफ? XUV 700 EV कब तक आएगा? भाई आज तो शोकेस करा नहीं इन लोगों ने, अब मैं देखो जो चीज़ कंफर्म नहीं है वो नहीं बता सकता, बट हाँ सितंबर में अपनी महिंद्रा की 3 डोर थार का अपडेट जरूर आ रहा है। इतने दिन से बोलेरो नियो की बात चल रही थी, अब क्या माने भाई आने वाली है कि नहीं? भाई बोलेरो नियो तो पता नहीं, बट विजन एस जो है हम लोगों ने, देखो अब मैं आपको एक बहुत सरल शब्द में बताता हूँ, जो इतने दिन से कैमोफ्लेज में गाड़ी देखी, जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है सबने यही बोला कि ये गाड़ी जो है बोलेरो है, बोलेरो बोलेरो। हमने भी यही बोला, ठीक है, हम नहीं कहते हैं, बहुत बड़े मीडिया हाउस है जो बड़े बड़े हैं, मतलब एग्जैक्ट लगा लो मिलियनों बैठे, उनने भी बोला बोलेरो है, उनने भी बोला कल लॉन्च होगी। विजन एस जो है ना वो बोलेरो के नाम से आ सकता है, कंसिडरिंग मेरा पॉइंट नंबर 1 समझिए कि महिंद्रा ने हमेशा ऐसे करा है कि इनकी बोलेरो जो TUV 300 थी वो चल नहीं रही थी, तो उन्हें बोलेरो नियो नाम से निकाल दिया, उसको भी चल गई। तो यहाँ पे ये गाड़ी को भी बोलेरो नाम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक तो बोलेरो का फैन बेस मिल जाएगा, दूसरा जो है नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि कुछ लोग आज भी बोलेरो इसलिए ना ले सोच के कि यार बोलेरो थोड़ा देसी नाम लगता है, तो अगर ये कुछ और प्रोडक्ट से आता भाई, यार देखो सिंपल है, मैं आपको ह्यूमन फिलोसफी समझाता हूँ कि अगर मान लो आपसे पूछा आपके पास कौन सी गाड़ी है, वो बोले बोलेरो है, तो शायद कोई लोग मूवी बना ले इस चीज को देख के, हालांकि बोलेरो एक अपने आप में फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। फिर दूसरा चीज ये कि अगर आप बोलोगे आपके पास कौन सी गाड़ी है, मैं नाम लूँ भाई मेरे पे स्कॉर्पियो है, मेरे पे थार है, तो रौला अलग सा ही जाता है, तो शायद से नाम भी चेंज हो सकता है, बाकी देखते हैं। भाई बोलेरो नियो 5 सीटर ही रहेगी। महिंद्रा थार 3 डोर भाई सितंबर में आएगी, इतने दिन से भाई, सही बात है। राम राम भाई, इतने दिन से बोलेरो का वेट कर रहा था पर उतना मजा नहीं आया, हट्टी आया टाइफिस हो गया, नहीं हट्टी आया टाइफिस हो गया भाई देखो मैं कह रहा हूँ वेट कर लो, इतनी जल्दी निराश मत हो निराश, इतनी जल्दी मत हो। बोलेरो का तो नाम ही नहीं लिया है वेट में, नाम क्यों लेंगे भाई, कंसेप्ट जब पूरा उन्हें दिखाना था, कंसेप्ट का मतलब ही ये होता है मेरी जान कि नाम नहीं लिया जाएगा।
तो फिर न्यू बोलेरो नियो का 5 सीटर रहेगी और उसमें रियर एसी वेंट्स होगा। ये गाड़ी बहुत अच्छी होने वाली है और सोर्सेस तो ये बताते हैं, जैसे किया सेरोज लेके आई ना किया, तो वही सेम प्राइस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे कि बेस मॉडल आप 9-10 लाख रुपए में ले आओ और टॉप मॉडल 19 लाख का जाएगा। तो देखो अभी टॉप मॉडल में तो पता नहीं क्या क्या एडास वगैरह भी आ सकता है, जो हम लोगों ने देखा भी था। राम राम भाई, आज बोलेरो हो गई क्या लॉन्च तो कुछ भी नहीं हुआ, यही हुए थोड़े से। तो फिर न्यू बोलेरो बता दिया भाई का। स्क्यूडो कब आएगी? स्क्यूडो September 3 भाई। सफारी ईवी कब आएगी? नो सच न्यूज आयुष भाई सफारी ईवी पे। बोलेरो नियो लेने का सोच रहा था, मतलब यार अभी वो हेडलाइट अलग है, विजन एस की रील्स है भाई। नहीं, विजन मतलब होता है कंसेप्ट, मतलब जो आप लोग गाड़ियां, जो मैं समझाता हूँ, कंसेप्ट का मतलब ये है कि जो गाड़ियां आप लोग जैसे ऑटो एक्सपो में देखते हो फिर वो आती कुछ और है, सेम वही चीज होती है, तो वही आपको दिखाया गया है। एनीवेज भाई, शाम को देखो 8 बजे 8:30-9 बजे का वेट कर लीजिएगा। मैं बैठ रहा हूँ बस अपनी वीडियो बनाने के लिए, टाइम लगेगा, थोड़ी बेहतरीन वीडियो है और आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और किसी मेरे भाई को अगर बुरी लगी हो आज की वीडियो तो माफ करिएगा। मिलेंगे आपसे कल एक और बाय और धन्यवाद। ओके।